In this video, we will study about the different myeloid cells and their role. So, firstly, जो भी हमारे ब्लड सेल्स होते हैं और जो इम्यून सेल्स होते हैं वो बोन मैरो के अंदर बनते हैं और बोन मैरो के अंदर एक स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स जो मल्टीपोटेंट सेल होते हैं. These hematopoietic stem cells give rise to myeloid cells and lymphoid cells. These are the progenitors also. These are the progenitor cells which give rise to the specific progenitor cells. Then hematopoietic stem cells give rise to myeloid cells and lymphoid cells. Myeloid cells give rise to dendritic cells, granulocyte, monocyte progenitor cells, megakaryocytes, erythroid progenitors. And here lymphoid cells or that are the progenitor cells give rise to natural killer cells, T cell progenitor, B cell progenitor and dendritic cell. So now we will study about different different cells. First is dendritic cell. So dendritic cell is a type of immune cells. देयर मेन फंक्शन इज टू कैप्चर द एंटीजन. ये एंटीजन को कैप्चर करते हैं और उन्हें प्रेजेंट करते हैं. उन एंटीजन को फिर अपने सरफेस के ऊपर प्रेजेंट करते हैं और फिर टी सेल के पास उन्हें लेकर जाते हैं और इनिशिएट करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स को. डेंड्रिटिक सेल इस टाइप का दिखता है और इसका नाम डेंड्रिटिक सेल इसलिए क्योंकि वो डेंड्राइट्स को रिजेंबल करता है, जो कि नर्व सेल की डेंड्राइट्स हैं उन्हें रिजेंबल करता है. Formed through both myeloid and lymphoid lineages. मतलब both the myeloid and lymphoid progenitors form the dendritic cells. तो क्या होता है, डेंड्रेटिक सेल्स जब एनकाउंटर करते हैं फॉरेन सब्सटेंस को तो ये उसे इनगल्फ कर लेते हैं और फिर उस एंटीजन को ब्रेक डाउन करते हैं फ्रेगमेंट्स में और उन्हें उन फ्रेगमेंट्स को अपने सरफेस के ऊपर डिस्प्ले करते हैं और फिर ये जाते हैं लिम्फ नोड में जाते हैं और वहाँ पर टी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें एक्टिवेट कर देते हैं. दिस इज ऑल अबाउट द डेंड्रेटिक सेल्स. नाउ अबाउट मेगाकैरियोसाइट्स. सो मेगाकैरियोसाइट्स कैसे बनते हैं? पहले जो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स हैं वो गिव राइज टू megakaryocytes progenitors which will give rise to megakaryocytes, and with the process of thrombopoiesis megakaryocytes give rise to the platelets. Now platelets play crucial role for blood clotting. They also facilitate recruitment of immune cells to the site of inflammation. They release cytokines, chemokines, etc., which contribute to the microbial defense. Now, talk about the erythroid progenitors. Hematopoietic stem cells give rise to erythroid progenitor cells, and erythroid progenitor cells give rise to the RBCs. Due to various growth factor like erythropoietin, which is released by the kidney in response to the low O2 level in blood, kidney produced erythropoietin which stimulate hematopoietic stem cells to produce thyroid progenitor cells which give rise to the mature RBC. Now, erythropoietin produced by kidney in response to low O2 in the blood, and it stimulates proliferation and differentiation of erythroid progenitor cells. Now, granulocytes, monocyte progenitor cells. These are found in the bone marrow. These progenitor cells give rise to the granulocytes progenitor and monocytes progenitor, and granulocytes give rise to the neutrophil, eosinophil and basophil precursors. Now we talk about the granulocytes. इनका नाम ग्रेनुलोसाइट इसलिए क्योंकि इनके पास ग्रेन्यूल्स होते हैं इनके साइटोप्लाज्म के अंदर. ग्रेन्यूल्स कंटेन वेरियस एंजाइम्स एक्सेट्रा एंजाइम्स और उसके पास बहुत और भी कुछ सब्सटेंस होते हैं. नाउ फर्स्ट वी टॉक अबाउट द न्यूट्रोफिल. एस का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसका जो न्यूक्लियस है वो मल्टी लोब्ड है. ये इसका साइटोप्लाज्म है और ये ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है. हैव मल्टी लोब न्यूक्लियस, शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है और एक्टिव फेगोसाइटोटिक सेल्स होते हैं न्यूट्रोफिल्स. So, hematopoietic stem cells give rise to myeloid progenitors. Myeloid progenitor give rise to the neutrophil precursor cells, which mature into the neutrophils. Now, जो न्यूट्रोफिल्स हैं उनके पास प्राइमरी ग्रेन्यूल्स होते हैं और सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स होते हैं.
जिनके पास कुछ कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, लाइक प्राइमरी ग्रेन्यूल्स के पास लाइसोजाइम, पेरोक्सिडेज एंड वेरियस हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, वेयर एज सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स कंटेन कोलाजिनेस, lysozyme, etc. Neutrophil are most abundant type of WBC, first responder to the infection. Now talk about the eosinophils. Eosinophils has bilobed nucleus, cytoplasm and granules. These are phagocytotic cells and play role against parasitic infection. Hematopoietic stem cell give rise to the myeloid cells. Myeloid cell give rise to the granulocyte progenitor cells, and progenitor cells give rise to the eosinophil precursor cells, which will mature into the mature eosinophil. Granules of eosinophil secrete substance or content that will damage the parasite membrane. Now, basophil. Basophil consists of nucleus, cytoplasm and granules. Hematopoietic stem cell give rise to the myeloid progenitor cells, then basophil precursor cells, and then which give rise to the basophil. Has lobed nucleus and cytoplasmic granules. These are known phagocytotic granulocytes. Their cytoplasmic granules release substance which will play important role in allergic responses. Monocytes do not consist of granules. They consist of cytoplasm and nucleus. Hematopoietic stem cells give rise to myeloid progenitor cells, which give rise to the monocyte precursor cells, and they will mature into the monocytes, and monocytes give rise to the macrophages. They differentiate into the macrophages. Monocytes has large and single nucleus. They lack granules. Monocytes entered in when they entered in the tissue, they differentiate into the macrophages, which are the specialized phagocytotic cells that digest the pathogen and play important role in immunity.